शुक्रिया चेयरमैन साहब। पहले तो जो तारर साहब ने बहुत अहम मामला रेज़ किया है मॉब लिंचिंग का जो खानेवाल में हुआ है, हम सब उसकी ऑर्डर प्लीज सुनें जी। भरपूर और शदीद मजम्मत करते हैं, मगर पहले भी हमने मजम्मत की और हम देख रहे हैं कि माशरे में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, जैसी भी हो, ये एक माशी हमारे सोसाइटी का इशू बनता जा रहा है कि लोग समझते हैं कि वो बग़ैर किसी को ट्राई किए, बग़ैर अदालतों में रजू किए अपनी अदालतें प्राइवेट लगा सकते हैं। तो निजी अदालतें और इस तरह की बर्बरियत बेशक हिंदुस्तान में हो रही होगी, लेकिन हम ये यहाँ नहीं होने दे सकते। और मुझे ये भी मैं समझती हूँ चेयरमैन साहब, अगर आप मौजू समझें, एक्शन तो ज़रूर लिया जा रहा है और सब ने ये निशानदेही के बाद ये अश्योरेंस भी दी है कि इट विल बी टेकन। अगर आप मुनासिब समझें तो ह्यूमन राइट्स कमेटी में इस इशू को डिबेट होने भेज दें कि रिकमेंडेशंस इस पर कुछ पेशरफ्त हो कि ये क्यों हो रहा है और क्या किया जाए। सेकेंडली चेयरमैन साहब, एक छोटा सा तो इशू नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि कुछ लोगों ने कहा है और कुछ बात चली है कि हमारे एक टीवी चैनल TV1 को मुअत्तल कर दिया गया है, उसको कुछ केबल ऑपरेटर्स की ज़रिए जो तरीक़ेकार होता है उसके ज़रिए बंद कर दिया गया है। किसी शो पे शायद गरीदा फारूकी का शो था जिसमें कोई बात हुई है, और अगर वो नामुनासिब लगी और तनकीद का निशाना बनने से इतने घबरा रही है ये हुकूमत, तो उनको याद दिलाएं कि पाकिस्तान में इस तरह चैनल बंदी और कलम बंदी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे भी जमहूरियत के इंडेक्स पे पाकिस्तान की रेटिंग बहुत नीचे आई है, और ये जो होती हैं ये फ्री प्रेस एक जमहूरियत का सतून है। हमारे जितने सहाफ़ी हैं उनसे पूछ लें कि हालात कभी इतने बुरे नहीं हुए। तो और मज़ीद अपनी जगह साई कराने से बेहतर ये चैनल वापस बहाल करें, और इस तरह की धमकियाँ और इस तरह की चैनल बंदियाँ, कलम बंदियाँ, आज़ादी इजहार का गला घोटना ये कहीं का निज़ाम नहीं है और इसकी हम मज़म्मत करते हैं। चेयरमैन साहब, आखिरी बात इज़ I wanted to speak to about what has happened between America and Afghanistan's funds. There's a humanitarian crisis in Afghanistan, and President Joe Biden has given an order of unfreezing half of the $7 billion of frozen Afghan assets. Now the point is, even half of that is going apparently to victims of 9/11. Now the point is, the United States and its allies, Chairman Sahab, have spent a good several $1 trillion in Afghanistan, much of which could have been given to the victims of 9/11. Secondly, the issue is that this is Afghan money and it belongs to the Afghan people. There is a terrible humanitarian crisis there, and women, children, common people are now beginning to starve and have been starving on the streets even of the center, which is Kabul. Irrespective of what the Taliban do or not, and we have been very clear that they must restore fundamental rights for women, for minorities, they must adhere to international principles, but so must the superpower. So must the superpower that writes the rules. They must return Afghan money to whom it belongs. That was the Central Bank of Afghanistan whose funds were frozen. That money is Afghan money. There is a humanitarian crisis there, and we would, through this forum, appeal to the United States to refer to its good, better side and send the money where it belongs. I understand that they already have sanctioned the Taliban, they have sanctioned many of the Haqqanis. Sanctions are in place, and sanctions, we know, all over history, have always hurt the poor and the vulnerable, Chairman Sahab. So while there are sanctions on, at least the money must be returned to the Afghan people. There are vehicles that can directly funnel aid to people. If they don't want to give it to the Taliban government, it can be funneled via third parties. Even Pakistan can volunteer for that, to the Afghan suffering and vulnerable people. So I thank you, and I hope the government will also make an appeal like this. जी सर, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। सर, ये मियाँ चन्नू वाला जो वाक़या हुआ, मैं लीडर ऑफ द हाउस जी, मैं सिर्फ मियाँ चन्नू वाली बात करना चाहता हूँ।
मियाँ चनू वाला जो वाक़या हुआ सर, और यहाँ पर ऑनरेबल कोलीग्स ने भी इस वाक़े को उठाया, और मैं समझता हूँ कि ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके जज्बात को, और तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ इस किस्म के वाक़यात के न सिर्फ ख़िलाफ़ है बल्कि इस सोच के ख़िलाफ़ भी मुत्तहिद है, पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान का पूरा माशरा। हाँ, इस माशरे के अंदर ये चंद लोग हैं जो अभी तक उस सोच को लेकर, इंतहा पसंदी की सोच को लेकर आगे चल रहे हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ पहले भी इक़दाम ले रही है, मज़ीद सख्त से सख्त इक़दाम लेंगे, और इंतज़ामी तौर पर भी जहाँ पर कहीं कहीं गफलत नज़र आई उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होगी, और ज़रूर इसको ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी लेके जाएँ, डिस्कस हों। ये हम सब का एक कलेक्टिव मसला है, और फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे और हमारे हमसाया में कि वहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर कर रही है और यहाँ पर स्टेट लड़ रही है इस किस्म की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़। Honorable Senator Tahir Bezanjo Saab.